Wait, watch this video before you file your ITR. You may be paying more tax than you need. So we are back in the income tax filing season. Everyone around you, your office mate, your friends, your family will be like, hey Bhagwan, how I'm gonna file the income tax return? Tax के सारे terms, jargons काफी confusing लगते हैं. So in today's video, I'm gonna break down how to file your income tax return in a simple and a quick manner. So there are total 7 types of ITR. In today's video, we will be focusing on ITR 1, which is applicable to the most of the people. So ITR 1 is applicable to those who earns income from salary, income from house property and income from other sources. Income from salary is that जब आप job करते हो आपको salary मिलती है from your employer, that is income from salary. Income from house property, it is that कि अगर आपने अपना घर किसी को rent पे दिया है and you are getting that rent, then it is income from house property. Third is the income from other sources. Other sources income is like interest on your saving account, interest on your FDs, dividend income, etc. Your income from all the 3 categories should be less than 50 lakh, then you can file ITR 1. But before we start, we will be needing few documents handy so that process can be fast and easy. Number 1, Form 16. Basically, this is given by your employer. This is your kamai ki kundli. Number 2 should be the total of your other income, which is interest on FD, interest on saving account. Write it down in one paper or maybe prepare an Excel for it. Third is your AIS should be downloaded with you. AIS is your annual information statement, which is that government has linked your PAN with every income sources. So वहाँ पे every detail आती है आपने कौन कौन सी income कमाई है linked with your PAN. So ये 3 documents should be ready and handy with you before going for a ITR 1. Let's get started. Alright, the first thing we will understand on how to download AIS, that is your annual information statement. I am assuming that at least you have your account on income tax portal. So यहाँ पे we will be logging in the portal with the PAN number as login ID and continue tick mark, and now we will write the password. PAN number, tick mark and the password. Click on the continue. So here on the top bar, you can see an AIS option, services, next to the services bar. AIS. Click on that, proceed. This will gonna take you to another tab, and over on the right side there is an option called as download AIS for fiscal year 24-25. So fiscal year 24-25 is April 2024 to March 2025. So there are 3 options: download AIS in the PDF format, download AIS for AIS utility, taxpayer information summary in the PDF. So we will be downloading first option, annual information statement, AIS in the PDF format. So to open this file, you will have to write your PAN number in a small letters and followed by your date of birth. So if your date of birth is 31st July 1995, so you will be writing 31st 07-1995. So here you can see that how much is your relating to tax deducted or collected at source, if कुछ deduct हुआ है, and other information which is linked with your PAN. So now we will go to the previous tab, eportal.incometax.gov.in. वहाँ पे there is an option on the second tab, e-file, income tax return, file your income tax return. For filing the financial year 24-25, you have to select the assessment year 25 to 26. And then we will be selecting online mode and continue. Then start new filing. Individual, continue. Select your ITR form. So today we will be doing ITR 1. So proceed with the ITR 1. So here the tab is open stating that please note that new tax regime is the default regime. We will say okay. Then we will click on let's get started. Here they are asking for the reason why you are filing the income tax return. So here I am selecting taxable income is more than the basic exemption limit. And if your income is not more than basic exemption limit, you can click on the others. Continue. So it will gonna take you to return summary. So there are only 1, 2, 3, 4, 5 steps to file your income tax return. It is that simple. So first tab is your personal information. Second is your gross total income. Third tab is for total deduction. Fourth is how much tax you have paid. And fifth one is verify your tax liabilities. So we will start with the first tab, personal information. So in the first tab, personal information, there will be few sections which will be pre-filled. और अगर नहीं है तो you can edit it by the clicking on edit option. यहाँ पे your will be first name, middle name, last name, PAN number, date of birth, Aadhaar number, contact details, address,
nature of employment, are you employed under central government, state government, etc. So I'll be selecting others. फिर उसके बाद पूछा है फाइलिंग सेक्शन, वाई यू आर फाइलिंग दिस रिटर्न. सो आई विल बी सिलेक्टिंग रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. ऑल्सो द ड्यू डेट फॉर द करंट ईयर इज 15 September, नॉट July 31st. So it is extended till 15 September this time. After that, there is another section which says that do you wish to exercise or the option under section 150 BAC of opting out a new tax regime. So यहाँ पे yes करना है if you are opting for old tax regime, और न्यू करना है इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द ओल्ड टैक्स रजीम, फॉर द न्यू टैक्स रजीम के लिए. सो ओल्ड टैक्स में ये फ़र्क है, ओल्ड टैक्स में यू कैन यूज़ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इफ़ यू हैव पेड फॉर LIC, PF एक्सेट्रा. और अगर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं है देन यू कैन ऑप्ट फॉर द न्यू टैक्स रजीम. नाउ इफ़ यू वांट टू सी कि आपका टैक्स किस में ज़्यादा बच रहा है, इन द ओल्ड टैक्स और इन द न्यू टैक्स, देयर इज़ वन ऑप्शन टू चेक योर इनकम टैक्स कैलकुलेटर. सो इफ़ वी क्लिक ऑन द इनकम टैक्स कैलकुलेटर इट विल ओपन अ न्यू टैब. वहाँ पे है बेसिक कैलकुलेटर. वहाँ पे यू हैव टू राइट योर पैन नंबर, नेम ऑफ द टैक्स पेयर, assessment year 25-26, category individual, and since it will be resident, and then we have to select our age below 60 years. So यहाँ पे total tax income as per the new tax regime यहाँ पे हम डाल देते हैं. For example if we are earning more than 16 lakh डाल देती हूँ just to check कितना आ रहा है. Now we will write कि कितना deduction we are claiming under old tax regime, 80C के अंदर, 80D के अंदर या HRA, ये सब मिला के हमारा कितना डिडक्शन है. सो मैं लिख देती हूँ 5 लाख. सिंस मैंने 6A का ऊपर ही डाल दिया तो ये आई विल कीप इट ब्लैंक. सो यहाँ पे यू कैन सी टैक्स समरी. टोटल टैक्स इनकम एज पर ओल्ड टैक्स regime is 11 lakh after deduction. Total taxable income as per new tax regime is 16 lakh. Tax amount as per old tax regime will be 1,48,200 and tax amount as per new tax regime is 1,76,800. So it shows that ki if we will file under old tax regime it will be more profitable for us because of the lower taxes. So going back to the main tab, यहाँ पे we will select कि we will be filing under old tax regime. Post that it will gonna come the bank details. यहाँ पे आपके बैंक के details रहेंगे, your bank name, your account number, your IFSC code. This is important to fill up because your refund will be coming in this account or your tax details will be coming in this account for advance payment. So this is important. Once this is done, please confirm. So we will be now begin with the second tab, income from salary. So यहाँ पे जो भी details है, it will be coming directly from your form 16. You just have to cross check the numbers from your form 16. So salary as per section ये भी form 16 से आएगा, सब कुछ आएगा यहाँ पे form 16 से. यहाँ पे you have to put deduction if you have claimed anything in your office, जैसे HRA है या leave travel allowances है या gratuity है, ऐसा कुछ है तो now you have to add that. So अगर मैं इसमें डाल दूँ 13A allowance, वो भी लिखा हुआ होता है on your form 16 कि कौन से section में deduct हुआ है. So वो आप पढ़ोगे and यहाँ पे डालोगे, it gets very easy. So यहाँ पे आप देखोगे you can't click on this tab. So यहाँ पे एक अलग सा टैब ओपन हो रहा है, Schedule 1013A हाउस रेंट अलाउंस. ये कैलकुलेशन आपको आपके ऑफिस में जो टैक्स फाइलिंग का एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके देता है, उसमें ये सारे फिगर्स रहते हैं कि हाउ दे हैव कैलकुलेटेड HRA. सो प्लेस ऑफ वर्क, मेट्रो, नॉन मेट्रो, आई विल सिलेक्ट मेट्रो. एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मैं यहाँ पे सब हाइपोथेटिकल फिगर्स डाल रही हूँ फॉर जस्ट दिस पर्पस. जो भी रेड स्टार मार्क है दैट इज़ द कंपल्सरी टैब विच वी हैव टू फिल अप. आई विल राइट बेसिक सैलरी एज 7 लाख मे बी. यहाँ पे 50% ऑफ योर बेसिक डाल देती हूँ, 4,50,000. 4 लाख डाल देती हूँ, 2 लाख डाल देती हूँ. सो ये कैलकुलेशन आपके पास वैसे भी रहेगा, उससे आप डालोगे जस्ट कॉपी पेस्टिंग वर्क. सो यहाँ पे इट विल टेक लोअर ऑफ 3 विच कम्स टू 2 लाख. सो यहाँ पे इट विल गोना रिफ्लेक्ट. यहाँ पे वी विल राइट प्रोफेशनल टैक्स जो हमेशा रहता है 2,500 उतना. यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए नीचे 0 आ रहा है. यहाँ पे हम 20 लाख का फिगर डाल देते. बस ये सारी फिगर्स आपको डालना नहीं है, आपको फॉर्म 16 से चेक करना है. मैं ये वीडियो के लिए डाल रही हूँ. सो नाउ इट इज़ कमिंग एज 17,047,500. This standard deduction is also automatic figure 50,000. So this will also match with your form 16 income chargeable under the head of salaries. आपको सब फॉर्म 16 से मिलेगा, बस आपको ये डिडक्शन डालना है वहाँ देख के. वी विल सेव दिस डिटेल, विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे उसकी समरी आएगी विच विल एग्जैक्टली मैच विथ योर फॉर्म 16. सो यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक.
Now the second tab says income from house property. If you have received any rent income on your property, you can write it over here. ना मेरे पास हाउस है ना मेरे पास रेंट है, सो या आई एम कीपिंग इट ब्लैंक. एक डिडक्शन मिलता है इफ़ यू हैव बॉट अ हाउस ऑन लोन, सो दैट यू गेट अ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल as a deduction, so you can put that over here. The third tab is income from other sources. So यहाँ पे आ रहा है 4988 which is directly coming from your AIS, जो मैंने आपको बताया था, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जहाँ से आपका पैन लिंक्ड है. सो वहाँ से आ जाता है डायरेक्टली डिविडेंड इनकम कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना है. सो यू हैव टू क्रॉस चेक विद द पेपर यू हैव प्रिपेयर्ड और द एक्सेल फाइल. अगर कुछ एडिट करना है तो यू हैव टू क्लिक इट ओवर योर एंड देन एडिट एंड डिलीट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. और कुछ अगर ऐड करना है यू कैन ऐड अनदर. यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम लिखा हुआ है, यू कैन ऐड दैट. आई गो बैक. यहाँ पे हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, then income from other sources. So your total income will come as the total of all the three tabs. There are few incomes which is exempt from the tax, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, कोई अमाउंट आपको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से मिला है फॉर डिजास्टर, ये सब आप पढ़ लोगे. अगर ऐसा कोई इनकम है यू कैन पुट इट ओवर हियर, यू कैन गेट दैट एज अ डिडक्शन. Then the last step says income on which no tax is payable. Long term capital gain, no chargeable to income tax. अगर आपका long term capital gain है which is less than 1,25,000, then the tax is not applicable. और अगर उससे ज़्यादा है तो you have to declare it over here. I'll confirm. I'll go to the third tab, total deduction. The first one is 80C. Deduction in respect of life insurance premium, deferred annuity, contribution to provident fund, etc. यहाँ पे हम डालेंगे अमाउंट जितना भी है. फॉर एग्जांपल 1,50,000 इसका लिमिट है, सो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 120 डाल रहे हैं. यहाँ पे अगर हमारी LIC है तो LIC पॉलिसी नंबर डालना है, प्रोविडेंट फंड है तो वो लिखना है, म्यूचुअल फंड में डाला है ELSS में तो वो वाला नंबर डालना है. सी इट्स कंपलसरी, सो वी हैव टू राइट समथिंग ओवर हियर. सो आई विल राइट म्यूचुअल फंड, PF, ELSS और जो भी उसका नंबर है. आई विल सेव इट. सो यहाँ पे आ गया 1,20,000. आई विल सेव इट. 80CCC पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड. सो ऐसा भी कोई है आपका डिडक्शन तो यू कैन एडिट एंड पुट द नंबर. देन कम्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं. सेम अगेन जो हम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे. देन कम टू द 80CCD 1B एंड 80CCD 2. दिस इज़ फॉर द NPS. अगर हमने खुद वॉलंटरी NPS में कंट्रीब्यूशन किया देन वी कैन पुट इट इन 80CCD 1B. एडिट करके जैसे 50,000 डाला है तो 50,000 जो भी प्राण नंबर है NPS का वो डाल के सेव करना. इफ़ एम्प्लॉयर ने NPS काटा है तो वो वाला यहाँ पे. इफ़ यू हैव मेड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ये हमारे लिए नॉन एडिटेबल है बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो यहाँ डालना है 80D में. फॉर यू स्पाउस एंड पेरेंट्स एंड ऐसे सारे डिडक्शन में अगर कुछ है तो आप डाल सकते हो. 80G यहाँ पे है, 80GG रेंट पेड. जनरली जो HRA क्लेम करते हैं वो रेंट पेड में नहीं करते. सो दैट्स द थिंग. अगर 10,000 से कम इंटरेस्ट है सो यू कैन क्लेम द डिडक्शन ऑल्सो. जो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल रहे हैं यहाँ पे यू कैन गेट द डिडक्शन ऑफ द सेम अमाउंट. सो आपका जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे मैच होगा 2,29,700. ये फिगर भी आपका फॉर्म 16 से मैच हो जाएगा. देन द फोर्थ टैब विल कम टैक्स पेड अमाउंट. ये भी आपकी TDS डिटेल से रहता है, सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक एंड कैन कन्फर्म. एंड यहाँ पे उन्होंने बोला है वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी. जो भी आपने नंबर्स दिए हैं उससे आपका रिफंड आ रहा है या पेमेंट आ रहा है. सो दिस वर दी स्टेप एंड देन इफ़ ये भी टिक हो गया देन यू कैन प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन. यहाँ पे इट विल बी समरी, यू हैव टू क्रॉस चेक विथ योर फॉर्म 16 एंड देन इट विल बी प्रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न. यहाँ पे यू हैव टू टिक मार्क, यू हैव टू राइट द प्लेस एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन. यहाँ पे अगर आपका कुछ एरर है तो यहाँ पे ये दिखेगा and then you can click and go back and correct it and then you can go back again and proceed to validation. इसके बाद there will be a tab to e-verify your account. वहाँ पे you have to e-verify through your OTP आधार linked or through your bank account and other means. So वो भी e-verify करना पड़ता है. उसमें you have to put your आधार linked मोबाइल नंबर, वहाँ पे OTP आएगा, you have to e-verify it. Then there will be a summary of your form will be generated. You have to submit it and you are done with the filing of ITR. It was that easy. I hope you enjoyed today's video and I made your income tax filing process more simpler. If you have any queries, you can put down in comments and I am here to help you out. Thank you so much.